Hello, beta. Now, in today's class, we want to go ahead and we want to understand how war and deficit is linked to each other. जब किसी भी इकोनॉमी में वॉर होता है, whenever there is a war in any economy, how does that war lead to deficit in the economy? गवर्नमेंट के बजट को उसके उस टाइम पे कैसे फर्क पड़ता है? How will the government deal that situation? उस सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे डील करेगी? We want to go ahead and we want to understand all of those concepts, right, beta? So try to understand, huh? Dekho, whenever there will be war in the economy, the government will have to purchase a lot of war machines, right? A lot of capital expenditure will be incurred on these things. तो जब भी वॉर होगा, वॉर लड़ने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे. द गवर्नमेंट विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. प्लस बेटा, द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक केयर अबाउट फॉर द डिफेंस ऑल्सो. डिफेंस का भी देखना पड़ेगा कि वहां पे प्रॉपर फूड, वाटर, यूनिफॉर्म सब कुछ जाए. सो अगेन दिस विल मीन दैट द गवर्नमेंट विल बी इनकरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंस. तो व्हेनेवर देयर इज वॉर इन द इकोनॉमी, जब भी किसी भी इकोनॉमी में वॉर होता है, like currently we talk about the Ukraine war. So whenever there will be war in the economy, it will lead to increase in the government expenditure. Government के खर्चे बढ़ जाएंगे. And when government expenditure will increase, then G minus T will also increase. And this G minus T, ये जो G minus T है, this is going ahead and this is telling the deficit of the government. ये गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बताता है. So when the G minus T will increase, it means that there will be more deficit in the economy. अब बेटा, the first thing that we have to try and understand, उसको बोलते हैं distributional effect. It is called as distributional effect. इसका क्या मतलब है? देखो, just try to understand this. हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. For example, आज इकोनॉमी में वॉर हुआ. In this war, there will be people who will be fighting the war. हाँ, out of these people who fight the war, जो भी war में जाते हैं, लड़ते हैं, some will die and some will live. तो after this war is over, जब ये war पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, then these people who will live, they will have some repercussions. इनके ऊपर भी कोई आगे फ्यूचर इफेक्ट दिखेंगे. कैसे? देखो, जब वॉर हुआ होगा, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ाए होंगे. गवर्नमेंट वुड हैव इंक्रीज्ड इट्स एक्सपेंडिचर. नाउ whenever the government increases expenditure, it means that government budget deficit increases. अब फ्यूचर में तो गवर्नमेंट को ये बजट डेफिसिट जो गवर्नमेंट का डेफिसिट हुआ है, उसको किसी तरीके से फाइनेंस करना पड़ेगा ना. somehow the government will have to go ahead and finance this deficit. तो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए देयर कैन बी टू वेज. व्हाट इज द फर्स्ट पे बेटा? द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस आफ्टर द वॉर इज ओवर. या तो टैक्स बढ़ा दो. अगर टैक्स बढ़ेगा तो जितना भी खर्चा हुआ था, यू विल बी एबल टू मीट दैट अप. और द गवर्नमेंट वुड हैव टेकन सम लोन. जब वॉर हुआ होगा, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उस वॉर को लड़ने के लिए कोई लोन लिया होगा, विच नाउ द गवर्नमेंट हैज टू रीपे द लोन. And to repay the loan repay कैसे करेगी गवर्नमेंट? How will government repay the loan? The government will have to take money from people. Again, वो टैक्स फॉर्म में भी ले सकती है या लोगों से लोन के फॉर्म में ले सकती है. So the point is that whenever there will be a war, there will be budget deficit क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा. Whenever there will be budget deficit, it means that in the future this will be passed on to the generation who lives. जो भी लोग जिंदा रह जाएंगे वॉर के बाद, जो भी लोग बचेंगे, उनको उस बर्डन को आगे बियर करना पड़ेगा. They have to bear the burden of the budget deficit that the government had taken. समझे बात? So let's read this out, बेटा. Deficit finance is a way to pass some of the burden of the war to the people who live आफ्टर वॉर. तो जो भी लोग पोस्ट वॉर रह जाते हैं, उनको इस डेफिसिट को फाइनेंस करना पड़ेगा. दे विल हैव टू फाइनेंस द डेफिसिट. डेफिसिट स्पेंडिंग हेल्प्स रिड्यूस द टैक्स डिस्टॉर्शन. अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो. हाँ, ट्राई टू सी दिस बेटा. देखो, आई एम सेइंग दैट देयर इज अ वॉर.
When there is war, the government expenditure is increased, government का खर्चा बढ़ा. This increase in government expenditure, it can be financed through two ways. दो तरीके से government इस खर्चे को finance कर सकती है. The first way is by increasing the taxes. या तो लोगों से टैक्स ज्यादा इकट्ठा करो ताकि ये खर्चा आप ले पाओ. So the first way is to increase the tax, and the second way is to go ahead and increase the debt. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उधारी लो, लोन लो. If the government relies on deficit financing, then G will increase. अब यहां देखो जरा ध्यान से. Beta, my equation is y is equal to c plus I plus g plus x minus m. अब जब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ाए ड्यूरिंग वॉर पीरियड, गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर, देन दिस जी इज इंक्रीजिंग. हमें पता है दैट व्हेनेवर जी इंक्रीजेस, it means that it can lead to shift of the IS curve outward, right? And whenever the IS curve will shift outward, it will lead to increase in the interest rate. And when the interest rate will increase, it will lead to crowding out effect. And crowding out effect will lead to decrease in the investment. So this is exactly what we want to go ahead and show here. So beta, just see, this is IS LM. The IS curve is shifting to the right क्योंकि G बढ़ रहा है. This is increasing the level of output and therefore increasing the level of interest rate. When this interest rate is increasing, it is causing investment to decrease. So one thing that is happening is that the investment in the economy is decreasing. अब हम बोल रहे हैं कि suppose the government finances this through taxes. तो बेटा गवर्नमेंट क्या करेगी कि जैसे ही the moment there will be increase in government expenditure, government बोलेगी to finance this expenditure, I will increase the taxes. तो government will increase the taxes. अब बेटा ध्यान से समझना बात को. हाँ, I can write y is equal to c plus I plus g plus x minus m. तो ये हो जाता है c bar plus c disposable income plus I plus g plus x minus m. तो बेटा this will be c bar plus c y minus t plus I plus g plus x minus m. बेटा this will be c bar plus cy minus ct plus I plus g plus x minus m. ये हो जाएगा हमारा y. Now just try to see this thing. During war, जब war हुआ, government will increase its expenditure. We know when G increases, मैंने आपको ये पूरा बताया है, when G increases, interest rate increases, investment decreases. This is called as crowding out effect. ठीक है, आगे देखने की कोशिश करो यहां पर. If when G increases, to finance this G, government increases T also. गवर्नमेंट ने बोले हाँ खर्चा तो बढ़ा है, बट इस खर्चे को मैं टैक्सेस के थ्रू ही फाइनेंस करूंगी. आई विल फाइनेंस दिस थ्रू टैक्सेस. तो व्हाट विल हैपन? वी विल सी दैट दीज टैक्सेस विल आल्सो इंक्रीज. बेटा टैक्सेस के आगे देयर इज अ नेगेटिव साइन. सो व्हेन टैक्सेस विल इंक्रीज, देन आउटपुट विल डिक्रीज. तो नाउ दीज टू थिंग्स विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. G increases, Y increases, interest rate increases, investment decreases. ये पहला इफेक्ट हो गया. At the same time, when G is increasing, tax is increasing, output is decreasing क्योंकि negative sign है, interest rate is decreasing, investment is increasing. So now these two things, they are going ahead and they are moving in the opposite direction. ये दोनों opposite direction में move कर रहे हैं. I am financing government expenditure through taxes. मेरा जो भी ये गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है, whatever is my government expenditure, I am trying to finance that government expenditure through the taxes. तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं. Now बेटा this is decreasing investment, this is increasing investment. But remember कि C, this with this T ना, there is a small c, right? And small c क्या करता है कि T के impact को थोड़ा कम कर देता है, right? This small c is a is the marginal propensity to consume. And ये कुछ
डेसिमल्स में होगा, मे बी दिस विल बी 0.8. तो सपोज g इंक्रीजेस बाय 1, तो इफ आई इंक्रीज t ऑल्सो बाय 1 ना, तो 1 into 0.9 माने दिस विल बी जस्ट 0.9. तो इनकम विल डिक्रीज बाय 0.9. तो डिक्रीज इन इनकम इज लेस, इंक्रीज इन इनकम इज मोर. तो नेट नेट सेम यहां पर होगा, दैट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल बी मोर देन डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. तो नेट इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, net investment will decrease, but it will not increase by the same amount as would have happened if there was no tax. Suppose imagine karo that when government would have increased its expenditure during war, जब government अपने expenditure को बढ़ाती, imagine what would have happened अगर government साथ में tax ना बढ़ाती. Imagine what would have happened अगर ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, दिस वुड हैव बीन फाइनेंस थ्रू डेट. गवर्नमेंट इसको उधारी से फाइनेंस करती, टैक्स बढ़ा के फाइनेंस ना करती, तब तो इंटरेस्ट रेट में ज्यादा इंक्रीज आता ना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट को नीचे करने के लिए देयर वाज नो फैक्टर अवेलेबल, राइट? सो एज देयर वाज नो फैक्टर अवेलेबल टू लोअर द इंटरेस्ट रेट, द ओनली थिंग दैट वुड हैव हैपेंड इज इंटरेस्ट रेट वुड हैव पुल्ड अपवर्ड्स. And if the interest rate would have pulled upwards, it would have meant that investment would have decreased by more amount. But now there is a corresponding item that I am financing this G through T. And जैसे ही मैंने war time में government expenditure बढ़ाया, मैंने लोगों पर tax भी बढ़ा देना है. So this will reduce Y, this will reduce I, this will increase investment. So net and net investment will still decrease. क्योंकि G का impact more है, there is no it's coefficient is 1 and यहाँ का coefficient C है, C is less than 1, तो G का impact ज्यादा है output पे, right? That is fine. But compared to the situation where there was no tax at all, we are better off. अभी हम एक बेहतर situation में है, we are at a better situation. Making some sense out of it? तो देखो बेटा, combining I will decrease by less amount. Clear? So let's read it out. The more government relies on deficit, the smaller the decrease in consumption during war, the larger the decrease in investment, means lower capital stock and lower output post war. थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा. we are saying कि जब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ाए वॉर पीरियड में, when government increases its expenditure during the war period, अगर इस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट लोन के थ्रू फाइनेंस करती है, इफ इट फाइनेंसेस इट थ्रू लोन्स और टैक्सेस नहीं लगाती, तो बेटा देयर विल बी मोर क्राउडिंग आउट इफेक्ट. इंटरेस्ट रेट ज्यादा से बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट विल फॉल बाय मोर अमाउंट. और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से गिरेगी, इफ इन्वेस्टमेंट विल फॉल बाय मोर अमाउंट, तो देयर विल बी लोअर कैपिटल स्टॉक फॉर फ्यूअर जनरेशन. तो ये जो खर्चा वॉर में हुआ, वट एवर एक्सपेंस वॉज डन ड्यूरिंग द वॉर, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर जनरेशन. इसकी वजह से हमारी सारी की सारी फ्यूचर जनरेशन इंपैक्ट हो जाएंगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज, राइट? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हम वॉर को डेट के थ्रू फाइनेंस करते हैं, इफ वी फाइनेंस वॉर थ्रू डेट्स, it will mean that the future generation will be impacted because there is going to be lower capital stock for the future generation. Future generations के लिए जो capital बचेगा वो बहुत ही कम बचेगा. Okay. By reducing capital accumulation, deficit becomes a way of passing the burden to the future generation. यही हमने बोला कि इस war की वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज फॉलिंग, तो इसका जो बर्डन है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक भी आ रहा है. इट इज गोइंग टिल द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है बेटा. नाउ वी कम टू रिड्यूसिंग द टैक्स डिस्टॉर्शन. अब हमें देखना है कि हम टैक्सेस के थ्रू क्या कर सकते हैं. इफ गवर्नमेंट वर टू इंक्रीज टैक्सेस इन ऑर्डर टू फाइनेंस टेम्परेरी इंक्रीज इन स्पेंडिंग, टैक्स रेट वुड हैव टू बी very high. High tax rate means high economic distortion. People can engage in the illegal activity. अब ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करो.
तो बेटा अभी तो हमने ये बोला दैट ड्यूरिंग वॉर whenever G increases, जब भी आप अपना खर्चा बढ़ाओगे, you should be preferring tax over taking debt. आप टैक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दो डेट के ऊपर, क्योंकि अगर आप डेट लोगे तो फ्यूचर जनरेशंस अफेक्ट हो जाएंगी एंड उनके लिए कैपिटल स्टॉक कम होगा. सो वी सेड दैट यू शुड बी गिविंग प्रेफरेंस टू टैक्सेस रादर देन डेट. ये हमें समझ में आ गया. नाउ वी आर गोइंग अहेड इन सेइंग कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे. वी विल हैव टू इंक्रीज टैक्स अ लॉट, क्योंकि हमें यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा करना है और खर्चे के लिए कहीं से रेवेन्यू चाहिए. अंडरस्टैंड, इफ वी इंक्रीज टैक्स बाय ह्यूज, अगर हम टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, इट वुड गो अहेड एंड इट वुड मीन दैट पीपल विल डू इलीगल एक्टिविटीज. Maybe people will involve in black market. Maybe people to pay the tax will do something illegal, right? So high tax rate can engage people in the illegal activities also. And ये वाला point government को consider करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. So the government must consider that if it increases taxes, it may lead to people engaging in illegal activities. It is better to maintain constant tax rate to smooth taxes. This is called as tax smoothing. इसीलिए हमें एकदम से बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं बढ़ाने हैं. We should maintain constant tax rate. We should be doing tax smoothing. Tax smoothing implies running large deficit when government spending is very high and small surplus during the other time. तो टैक्स स्मूथनिंग का ये मतलब है कि जब गवर्नमेंट की खर्चा बहुत ज्यादा हो तो रुको, टैक्स बहुत ज्यादा मत बढ़ाना, थोड़े अमाउंट से ही बढ़ाओ. और जब गवर्नमेंट का खर्चा बहुत कम हो तो टैक्स बहुत ज्यादा कम भी मत करना, कांस्टेंट पे ही रखना. सो स्मूथनिंग जस्ट मींस दैट यू डोंट गो अहेड एंड इंक्रीज टू मच टैक्स or decrease too much tax during adverse periods, opposite periods. आपको एक smoothen tax रखने का जरूरत है so that you ensure that people don't engage in the illegal activities. Am I clear, beta?